नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दीक्षे और आप हैं मेरे साथ। तो आज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में 8वां दिन है। तो आज का जो सबसे पहले सेशन हम लोग करने जा रहे हैं वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता श्रीमती आशा पारेख जी के साथ। तो चलिए चलते हैं। And we are also thankful to the speakers who took out their precious time from their busy schedule. And today we are here for an in-conversation session with Dada Saheb Falke Award winner Asha Parekh ji. And we have Miss Asha Parekh ji, a legendary Indian actress, film director, a producer who appeared in many successful films throughout her career, and was also conferred the Dada Saheb Falke Award at the 68th National Film Award Ceremony in 2022, the highest recognition in the field of Indian cinema. So ladies and gentlemen, requesting everyone to please put your hands together and welcome the veteran, the legendary, the evergreen actress, Miss Asha Parekh ji, onto the stage, please. And also join me in welcoming the moderator for this session, a film journalist and recipient of Padma Shri, Ms. Bhavna Somaya, onto the stage as well. And as a token of appreciation on behalf of the festival organizers, may I request Ms. Tanu Rai, the Deputy Director for IFFI, as well as Ms. Swetika Sachin, the CEO for ESG, to present memento to them and do the honors, please. Alright, once again, can I have a huge round of applause, please, from the lovely audience here at the film. Thank you so much. Alright, thank you so much. And now over to Bhavna ma'am for the rest of the session. Thank you. माइक का ये होता है कि जिसके पास होता है वो जल्दी पास ऑन नहीं करता है, और ये सिर्फ मिनिस्ट्री में नहीं चलता है, सब जगह पे चलता है। नमस्कार, मैं हूँ भावना सुमाया और it's my privilege and honor to be in conversation with an actor who is not just an actor but who has played several roles in her very long career. She has been a super successful actor, an expert dancer who has always performed ballets on stage. She has been a producer, a director, a distributor, which was unheard of in the 60s and the 70s and later on, but she was the pioneer who said that there is space for women in every field. After that, when she reduced her work assignments, she was the association head of very prominent names like CINTA, which is Cine Artists Association. She was the chairwoman of Censor Board, CBFC, and of course has won several awards and has been a philanthropist because she owned a hospital and has been a trustee of not just Asha Parekh Hospital, but been in close association with doctors and been there to understand the mechanics of hospital and how she can contribute to them and how the hospital also can aid her in her social service. I am fortunate that when I was a cub reporter in the early late 70s, I think 78 when I started off, she was an actor, so I have interviewed her as an actor. Later on, she moved on to different roles, and I have been an observer about how she handled her duties, how she embraced new opportunities, and how she reinvented herself in every decade. I just felt that I needed to give you this background before I started my own conversation with her. So it's been a long association of mine with her and also of hers with the film fraternity. आशा जी, पिछले कुछ हफ्तों से
सिर्फ दादा साहेब फाल्के अवार्ड की धुन चलती रहती है, तो वो आपके समझ में आते हैं कि नहीं? First and foremost, this award is being given to a lady after a very long time, and it has, I think it's 20 years after which I have received this award. And I'm also the first Gujarati to get a Dada Saheb Falke award. So it was a great thing for me, but for 2 days it didn't register in my mind. I said, Dada Saheb Falke award can't be me getting it. So for 2 days, you know, I was not very sure what I was really getting. And when I realized what I had got, I was thankful firstly to God, because it was too big a surprise for me. So I would thank God first. And Dada Saheb Falke, there was a film which was made by him, the first film, Harish Chandra Ki Factory. I think I was the chairperson to select any film which we could send for Oscars. And there was no good film coming. I mean, the South people had not sent any of their films, and we had very few films, and we had to select one film. And I think the best was Dada Saheb's film, Harish Chandra Ki Factory. So I've been connected with Dada Saheb Falke for a very, very long time. You know, that is the strange thing about show business, you know, you get connected to things, people, and then it comes a full circle. She selected Dada Saheb's film for the entry of Oscars, and today she's the recipient of Dada Saheb Falke Award. There is a very interesting story about how she got the phone call, because she was not in India, she was in America. And suddenly, what happened? I love that story. It happened that I was in Boston, and I was given a Lifetime Achievement Award there. So we finished up that night. That was the 26th, I think so, and 25th, I'm sorry. At 12:30 in the night, we packed off, came to the hotel, went to sleep. And at 4 o'clock, a lady rings me up and says, "Hello ma'am, is this Asha Parekh?" So I said, "Isn't it a wrong time to ring up? It's 4 o'clock in the morning. Close the telephone." So that poor girl just closed the phone, and then she sent a message. In the meantime, somebody from Bombay rang me up. He didn't say Dada Saheb Falke Award. He just said, "You are getting a national award. So you have to come back on the 30th. You have to be in Delhi." I said, 30th in Delhi? I'm here in Boston, and I was supposed to be going the next day to Detroit, to my brother's place. And I said, "Tomorrow I'm going to sleep the whole day because I'm tired now." So this person rings up and says, "You've got the national award." I said, "Can't you all change the date?" He said, "Madam, have you gone mad? How can we change the date? The president is coming." I said, okay, and I closed the telephone. In the meantime, he thought that I had not understood what had happened. So he told one of the ladies there who had come with me that, "Please tell her she's got the Dada Saheb Falke Award." So she came and just hugged me. And I said, "What's wrong?" She said, "You've got the Dada Saheb Falke Award." I said, "You must be joking." No, you got it." I said, "Oh, really? Now how do I reach Delhi on the 30th? I'm in Boston. Today is the 26th. So, well, we had to move everything. I had to fly down from Boston to New York and had to get a ticket. There was no ticket, so I had to fly on the 28th to Bombay because I had to get my sari, my jewelry. So I reached Bombay on the 29th. 30th morning, I flew to Delhi. 30th evening, I received my award. First, I flew down to Bombay. Second was my birthday. So that's the story of how I got it. Isn't it an amazing story? सच कह रही हूँ। तो ये है कि वो हीरोइंस को देखकर वो जो कपड़े पहन रहे हैं, उस तरह के कपड़े भी हम भी पहनेंगे। चाहे हम मोटे हो, चाहे हम दुबले हो,
लेकिन पहनेंगे हम वही जो हीरोइन पहन रही है। तो ये सारा कल्चर जो है ना, हम ज़्यादा वेस्टर्न हो गए हैं, और मुझे कभी कभी दुख होता है। हमारा म्यूज़िक, हमारा डांस कितना खूबसूरत है, तो वापस क्यों नहीं आ सकता है? हमने भी देखो बिजली डोल डांस किया था, वो क्लासिकल डांस था, तो वो क्यों नहीं हुआ? वैसे डांसेस क्यों नहीं आ सकते पहले वाले? तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि मुझे ज़रूर दुख होता है इसके बारे में। आशा जी, मैं आपसे एक हेलो, आई एम डॉक्टर संदीप फ्रॉम कोल्हापुर, महाराष्ट्र मैडम। पहले आपको देख के यहाँ पे हमें एहसास हुआ कि हमारे बाहरों के सपने और हमारा कारवा तीसरी मंजिल तक पहुँच गया। नंबर हमारे बढ़ गए, हमारे नंबर आयुष्य के बढ़ गए, लेकिन आपको देख के महसूस नहीं होता है कि ये नंबर कोई मायना नहीं रखता। So we are happy to see you here. Thank you. I'm honored. You are still agile and very much dynamic and active. So इसके लिए मैं आपको अच्छी health और whatever this thing. Same continuity. I want to ask you, do you have any bucket list? Do you have any bucket list? Bucket list? Yes. I'd love to sleep. I'd love to sleep as much as I can, because I overwork myself, have a lot of tensions on my head, because right now my hospital is going through a very bad crisis. So the tensions are there, so when you have too much of tensions, you want to go and sleep. So that is one of the bucket lists of mine, that I would love to sleep, and one I would love to travel. I belong to a medical community. I know what contributions you are doing to the health of the woman in this country. So with that, I think भावना जी, आपने थोड़ा क्वेश्चन इसके बारे में भी ज़्यादा पूछना चाहिए था। ये आशा जी जो वर्क कर रही है हेल्थ में, particularly women's health, is really commendable. Thank you. I speak without a mic because mic will not travel. ये बहुत इधर से दादा फलके दिया था और आपको दादा फलके अवार्ड मिला है, इसलिए आपको कांग्रेचुलेशन। एक मेरा क्वेश्चन ये है बहुत सारे लेखन के बारे में कि आज के जो बच्चे आ रहे हैं, जो नए नए कलाकार आ रहे हैं, और एक आपका जमाना था, आपकी सिल्वर जुबली फिल्में होती थी, दिलीप कुमार की, संजीव कुमार की, आपकी। आज के बच्चों की फिल्में लंबी समय क्यों नहीं चलती है, और हमको लिखने के लिए अवसर क्यों नहीं मिलता उन फिल्मों के बारे में? पहले हम आपके बारे में बहुत लिखा, मैंने आपके बारे में बहुत समीक्षा लिखी, करीब करीब मैंने 30-40 बार आपके बारे में लिखा, लेकिन आजकल के बच्चों के बारे में कोई उसमें एक्टिंग की प्रतिभा तो है, लेकिन अच्छा क्यों नहीं लगता है कि वो टिकते नहीं है, लंबे नहीं चलते? आजकल सब कुछ फास्ट चल रहा है, तो बेचारे कैसे टिकेंगे? सब चीजें बहुत फास्ट चल रही है, तो इतने आर्टिस्ट भी आ रहे हैं, इतने नए लोग भी आ रहे हैं। एक्सपायरी डेट मैंडेट हो गया ना, इसीलिए No comments. Yes, the gentleman, the bearded gentleman. Yes, you've been trying for a long time. Yes, On it before speaking. Good afternoon, Sir, madam. on का लीजिए. It is not on. Put it on. this one is on. Good afternoon, madam. I have seen your films when I was 5 years, 6 years old. I heard of your name, but just now I went through Wikipedia and I've seen many of your films and I learned so many things. With that, I asked you some doubts. One is that you have acted with Dada Singh. Yeah? Yes. Yes. Two more and you can answer me together. I'll finish in 2 minutes. Exactly. Yes, go ahead. Please. The other thing is, the Wikipedia says you had the power to select your hero at that time. You are the only actress who had the power to select your heroes. Yeah? And you are born on, if I am not mistaken, according to Wikipedia, on October 2nd, Gandhi Jayanti. Yeah? And madam, there is something wrong they have published in Wikipedia. The Wikipedia says, retired actress, please remove that. An actor never retires.
I like you. Thank you. We support that. Thank you. Thank you. मैडम, आशा जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जी। शम्मी कपूर देवनी साहब ने आपने काम किया था, ग्रेट एक्टर्स सभी मानते हैं उनको, आपकी उनके बारे में क्या राय है? शम्मी कपूर जी के लिए कह रहे हैं? शम्मी कपूर और देवानंद। देवानंद। शम्मी कपूर जी ने मेरे साथ पहली पिक्चर दिल दे के देखो की थी। तो ये था कि गीता जी और शम्मी जी वर शूटिंग इन राकेट फॉर दिल दे के देखो, एंड गीता जी हैड कम। तो बारिश हो गई थी तो शूटिंग हो नहीं रही थी, तो हम सब साथ में बैठे हुए थे। तो गीता जी आती थी और वो मुझे उठा लेती थी और कंधे पे डाल के गोल गोल घूमती थी। अच्छा, एक मिनट, गीता जी यानी गीता बाली, शम्मी कपूर's first wife. So then she went up to Shami ji and said कि इसको हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। I was only 16, इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो उस वक्त से मैं शमी जी को चाचू बुलाती थी और गीता जी को चाची बुलाती थी, और अब नीला जी को भी मैं चाची बुलाती हूँ। मैं फ़ोन करती हूँ तो ये नहीं कहती कि नीला जी, मैं कहती हूँ चाची, तो क्या हाँ बेटा बोलो क्या है। तो वो एक जो बॉन्डिंग था उनके साथ, उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, जैसे गाने कैसे गाते हैं, लिप सिंग कैसे करते हैं। तो उनके साथ एक अच्छा सा रैपो हो गया था। देव साहब के साथ मैंने 2 फिल्में की। आई डिड 2 फिल्म्स विद हिम। हाँ, सॉरी, हाँ, एक फिल्म भूल गई मैं। उनके साथ भी काम करना अच्छा लगता था, लेकिन वो अपने में मस्त रहते थे। वो क्या करने वाले हैं शॉट में वो कभी मालूम नहीं होता था। वो फटाक से कुछ कर लेते थे तो उसका रिएक्शन मुझे करना पड़ता था। तो बट इट वाज फन वर्किंग विद हिम बिकॉज ही वाज अ हैप्पी गो लकी मैन, टू engrossed in himself. My question's not answered, madam. अच्छा, आपने एक पूछ लिया, अभी दूसरे को चांस दीजिए। No, my आजकल की जो फिल्में बन रही हैं आशा जी, उसमें आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, और क्या उसमें कुछ काम करना आप चाहती? अगर चाहती तो उसमें क्या फेरबदल करती? थोड़ी चॉइस हो कि कौन सी फिल्म की बात कर रहे हो, जो आपकी पसंद, जो आज अभी जो रिलीज हुई है ऊंचाई, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। दृश्यम 2 है, बहुत अच्छी पिक्चरें बन रही है। और मैं अपने आप को उसमें देखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे काम नहीं करना है, तो बस एज अ ऑडियंस में पिक्चर देखती हूँ। तो ये नहीं सोचती कि मैं वहाँ होती तो मैं कैसे करती, ये अब मैं नहीं सोचती। डायरेक्शन में कभी फिर दोबारा आना चाहेंगी कि कुछ बनाएंगी कुछ अच्छा? 80 साल में ये सवाल करा। 80 साल की तो आप लगती भी नहीं बिल्कुल। आप तो इतना लगती नहीं हूँ। एवरग्रीन आर्टिस्ट, एवरग्रीन। थैंक यू सो मच नम्रता। आपका सवाल बहुत अच्छा था, और उसमें मैं थोड़ा सा ऐड ये करूँगी कि मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप को कोई फिल्म के अंदर देखती है, जैसे उन्होंने अभी बताया, मगर उनको अभी भी फिल्मों में रुचि है देखने में। रुचि है। और मैं अगर पूछती हूँ कि आशा जी मेरा रिव्यू भेज दूँ क्या, तो बोलती हाँ भेज दो। So she's very interested in what the critics are having to say about the movie and watching the movie and discussing the movie. उनको फिल्मों में देखने की रुचि और हमको उनको देखने की रुचि है। नेक्स्ट जन्म में। मैं हमेशा नहीं, आप तो ऑलवेज आप रहेंगी। एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से अभी भी जुड़ी हुई हूँ। फिल्म इंडस्ट्री वेलफेयर ट्रस्ट की मैं सेक्रेटरी हूँ, और हम लोग सब जितने फिल्म के लोग हैं उनको हम मेडिकल एड देते हैं, उनके बच्चों को एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन के लिए पैसे देते हैं। और ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लाइटमैन होते हैं, स्पॉट बॉयज़ होते हैं, उनकी तनख्वाह कितनी होती है, और उनको कभी हार्ट का प्रॉब्लम होता है, कभी किडनी का प्रॉब्लम होता है, तो वो थोड़ा बहुत सा हम दे सकते हैं, हम देते हैं। तो ऐसे तो नहीं है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से बाहर हूँ। मुखर्जी के बारे
लव इन टोक्यो आपकी, जॉय मुखर्जी, उनके बारे में कुछ हो आपकी अच्छी लगती थी जोड़ी मुझको। Also about Dada Singh, please. Dada Singh. अगर आपको एक्सपीरियंस है कोई ये चीज याद आ रही है। नम्रता बाद में हम इंटरव्यू करेंगे, ओके? It's alright. Hello, hello. जी। Okay, this is the last question. Yes, Mr. Richard. Yes. So, ma'am, this is Dr. Rajesh from Kolhapur again, and basically I am from the pharmacy field. Means I am from PhD, but I wish you the medicine-free life ahead. Even our industry be closed, but your pharmacy industry be closed. But I wish a medicine-free life ahead to the ma'am. So it's a great privilege to witness this wonderful conversation here, and I truly said that actually you are truly deserve to be receive this most prestigious award, that is Dada Saheb Falke Award. So I request all the audience to have the huge round of applause for this wonderful award. Thank you. And my question is not like actually the question, but we would be very happy to hear one memory regarding associated with the Kati Patang and Rajesh Ji Khanna. So we would like to hear one memory associated with the film Kati Patang. Any memory we would like to share with us? उन्होंने ऑलरेडी शेयर कर दिया था। Yeah, ma'am, but with along with the Rajesh Ji Khanna. सुनिए, आपका सवाल थोड़ा सा लंबा था और अभी क्या यहाँ से मुझे इशारे किए जा रहे हैं कि ये सेशन कंप्लीट करना है। मैं माफी चाहती हूँ। Any memory? Small memory. You have the last word. Whatever you want to say to the audience. Well, I hope I was prompt in giving all the answers, and I hope you must have liked the answers which I gave you all. But they were beautiful. Thank you very much. Thank you very much. Alright, so once again, can I have a GL? दोस्तों अभी आपने सुना आशा पारेख जी को, और हमारी अगली फिल्म है 2:30 बजे, और अभी खाने का समय हो रहा है, तो चलिए चलते हैं।